Bismillahirrahmanirrahim. This is our final year project. It is Pest Identification and Control System. Our group members include Hamza Madja 015 and Zainul Abdin 020. Title and brief overview. Our final year project is Pest Identification and Control System. It is a web-based application that is designed to target the rural residents, especially farmers who face problems in the form of pest infestation due to which they suffer heavy losses. Our system is basically designed to aid these people in not only identifying the pest but also it provides them with a suitable solution in the form of a pesticide. The project description includes that we propose an identification and recognition system. This system will identify the pest infesting the crops and it will provide the details of the pest along with the suitable pesticide to the user. The objectives of our final year project include that we want to make a time and cost efficient system. We want to provide them with an interactive GUI to facilitate all types of users. Alongside that, we want to also uh, provide the users with Urdu audio so that they can easily use our system. Like they can easily enter their words in Urdu, and our system will identify those words alongside the pest and also provide them with a pesticide to deal with that pest. Our perspective basically want to target 62% of the rural population, as these populations include farmers who are dependent on farming and agriculture output. Our application can assist these people in dealing with the pest problems and provide a solution for them in the form of a pesticide as well. Our technical aspect of the project includes that we use Python, VS Code, Django, Anaconda, CSS, React.js, Bootstrap, HTML5, and MySQL. Project working. Our project working includes that the user will provide the image of infected crop to the system, PIC. The proposed system will process that image, after which the image will undergo machine learning techniques such as CNN, CNN-STM, CNN-GRU, and display pest results back to the user. Then as stated earlier, our system will use a widely recognized dataset IP102 for pest recognition, and we will use our own dataset of pesticides to recommend suitable pesticides. Apart from the recommendation and identification, our application also serves the purpose of providing information to the user, such as crop name, crop image, planting month, harvesting month, and attacking pest. That's all. This is the front end for our FIP, Pest Identification and Control System. When the user first opens our web-based application, he will see a login page. Here he has to register himself into our system to access our application. He will click on register, after which he has to go through the sign up process. In the sign up process, he has to enter his name. Like I will put my name here, Hamza Zia. Then he has to enter his email. I'll put my email hamza11@gmail.com. After which he will select a password for his user ID and then he will confirm his same password. After doing that, he has to click on sign up and the process of signing in will be complete. Then he has to enter the same credentials that he used earlier while registering himself. I'll use my same email that I entered earlier, hamza11@gmail.com. Then I will enter my password that I used earlier as well. After entering both my email and my password, I have successfully signed into the system. Now, firstly, the user will be greeted by the home page where he can upload his image by clicking on the upload image button, and then he has to click on the detect button so that the image can undergo those machine learning techniques to identify the pest. Secondly, he can access the tutorials page. Here he has two options: tutorials in English and tutorials in Urdu. He can use both of these. He can listen to both of these tutorials so that he can understand the use of our application better. Thirdly, he can access the crop season page where he can be graded by a table. Now, this table is for his information, for enhancing information, like he can learn about crop names, crop images, sowing plant month, harvesting month, and like best like wheat, November, December. It basically harvests in March, April, and the pest that usually attracts it is Hessian fly. After going through the crop season page, he can then access the About Us section where he can learn the purpose and role of our application and how it can assist him in providing him with information regarding not only pest but the pesticide as well and in dealing with them as well. Lastly, he can use the contact us section where he can input his name and his email, and he can also message us a suggestion and we so that we can later on enhance our system regarding his suggestions. Lastly, he has to log out of the system before leaving. जैनुल आबदीन है। मैं आपको फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में कोड के बारे में बताऊंगा।
फ्रंट एंड हमने रिएक्ट जेएस से किया है और बैक एंड में हमने जेंगो इस्तेमाल किया है। फ्रंट एंड में सबसे पहले हमारे पास app.js की फाइल है। app.js की फाइल में हमने सबसे पहले इंपोर्ट करवाया है, जितने भी हमारे पास पेजेस हैं वो हमने इंपोर्ट करवाए हैं। इसके बाद हमने नैव बार बनाई है app.js में। इसके बाद इन सारे पेजेस को राउट किया है। इसके साथ ये app.css की फाइल है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा पेज है वो ट्यूटोरियल्स का है। ट्यूटोरियल्स हमारे पास जैसा कि सेमी इलिटरेट पीपल होते हैं तो उनको समझाने के लिए हमने ट्यूटोरियल्स बनाए हैं वेबसाइट से। उसमें हमने यूट्यूब के वीडियो लिंक एम्बेड किए हैं। ट्यूटोरियल्स हमारे दो तरह की लैंग्वेज में है, उर्दू में भी ट्यूटोरियल्स होंगे, इंग्लिश में भी। ये हमारे पास ट्यूटोरियल डॉट सी एस एस की फाइल है। इसके बाद हमारे पास क्रॉप सीजन आ जाता है। क्रॉप सीजन में हमने टेबल बनाया है। टेबल में हमने सारी क्रॉप्स की डिटेल्स बताई हैं, किस मौसम में कौन सा क्रॉप्स सही है और किस मौसम में किसको बोया जाता है, उसको काटा जाता है। इसमें हमने सारी पहले पिक्चर्स अपलोड की हैं, इंपोर्ट करवाई हैं, ताकि हर क्रॉप के आगे उसकी पिक्चर्स को भी पिक्चर्स के जरिए बताया जा सके कि ये कौन सी क्रॉप है, अगर किसी को समझ नहीं आती। एक सी एस एस की फाइल है क्रॉप डॉट सीजन की। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा अबाउट पेज। अबाउट पेज में हमने अपनी वेबसाइट के बारे में बताया और एग्रीकल्चर के बारे में बताया कि ये हमारी वेबसाइट क्यों ज़रूरी है और हम क्या कर रहे हैं इसमें। इसके बाद कंटेक्ट पेज है। कंटेक्ट डॉट जेएस में हमारे पास अगर कोई यूज़र या फार्मर जो हमें कोई सजेशंस देना चाहे, कोई रिव्यू देना चाहे, वो दे सकता है। और ये कंटेक्ट डॉट सी एस एस की फाइल है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है साइन इन। साइन इन डॉट जेएस की फाइल में हमने सबसे पहले साइन इन का फंक्शन कॉल किया। इसमें यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह होगा। इसके बाद हमने इसमें एक्सियास इंपोर्ट किया है। एक्सियास एक लाइब्रेरी है जो HTTP रिक्वेस्ट को इधर प्रेजेंट करती है, मतलब APIs को यूज़ करती है। ये साइन इन डॉट सी एस एस की फाइल है। इसके बाद हमारे पास साइन अप है। साइन अप में यूज़र नेम पासवर्ड ईमेल और अकाउंट क्रिएट करने के लिए ये इस्तेमाल होगा, कंफर्म पासवर्ड। ये हमने इसकी ऑथेंटिकेशन करवाई हुई है बैकएंड से। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बैकएंड। बैकएंड में सेटिंग डॉट py का फोल्डर है। इसमें सबसे पहले हमारे पास इंस्टॉल्ड ऐप आ जाती हैं। इंस्टॉल्ड ऐप एडमिन डॉट ऑथ, ये हमारे पास एप्लीकेशंस डिफाइन हमने इधर की हुई है। इसके बाद हमारे पास मिडल वेयर आ जाता है। मिडलवेयर बेसिकली एक रेगुलर पाइथन की क्लास है जो जेंगो के रिस्पांस को गेट और करती है और उसके बाद फॉरवर्ड करती है। इसमें हमने ये मिडलवेयर जेंगो के बेसिकली मिडलवेयर जेंगो की यूज़ की हुई है। इसके बाद टेम्पलेट्स का फोल्डर है, टेम्पलेट्स यूज़ की हुई है। ये हमारे पास डेटाबेस है। डेटाबेस जेंगो हमने यूज़ किया हुआ है और डेटाबेस जेंगो का जो हमने एसक्यूलाइट यूज़ किया हुआ है। इसके बाद पासवर्ड की ऑथेंटिकेशन की है। अगर पासवर्ड में मिनिमम करेक्टर हो, यानी कि मिनिमम कितने करेक्टर होता है वो होगा, एरर मैसेज देगा। अगर कोई कॉमन पासवर्ड एंटर करता है 1 2 3 4 5 तो वो एरर मैसेज देगा। कोई न्यूमेरिक पासवर्ड एंटर करता है तो उस पर भी एक मैसेज देगा। इसके बाद हमारे पास URL डॉट फोल्डर है। इसमें हमने API के जरिए URL क्रिएट की हुई है। इसके बाद हमारे पास सेटिंग डॉट, इसके बाद व्यूज डॉट py है। इसमें ईमेल की ऑथेंटिकेशन की है। ये URL इसमें रजिस्ट्रेशन की हुई है। टेस्ट डॉट पी वाई है। इसके बाद हमारे पास सिग्नल्स हैं जिसमें हम अपडेट यूज़र कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये डैशबोर्ड है इसका जेंगो का। इसमें हमारे पास ये यूज़र हैं। ये यूज़र हमने जो ऐड किए हैं, साइन अप करते हैं तो वो है ये एक जैन के नाम से हमने एक सुपर यूज़र क्रिएट किया है जो एडमिन है। तो ये हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड था।